Hello students, welcome back to my channel. This is Shalini and I am going to start you all with a new lesson from Footprints Without Feet, and the name of the lesson is A Question of Trust by Victor Canning. Now students, you can see a question of trust. Again, there is a story which is based on the trust. And as in the earlier story, we have read that in the thief story, it was also based on trust. But in that story, we have seen that trust changes the person to a better life, right? That was a good lesson he got. But in the story, A Question of Trust, will come to know that we should not trust any person blindly, and it can result into two things: either you become a better person or you learn a lesson. So here again in this story, the important character, that is Horace Standby, he learned a lesson in his life that we should not trust a person blindly by his look or appearance. Now let's come to the introduction of the story. Horace Standby was a good, honest citizen. He was unmarried and had business of locks, but he was not completely an honest man. Now students, I am going to tell you in this story how. He had served his first and only sentence in a prison library. Every year, he robbed a safe for the sake of reading expensive and rare books. He was fond of reading the books. Horace planned for a grand robbery at Shotover Grange, and there he found £15,000 worth of jewels and thought it would serve his purpose for the next 2 years. So he was not an honest man and he planned a grand robbery to serve his purpose. Purpose was to read the books. He found the keys hanging on the kitchen door and a dog lying there. He calmed the dog by calling its name and pampering it. So he was quite an intelligent person. Horace felt tickling in his nose because of the flowers and sneezed a little, and so he covered his face with a handkerchief. Suddenly, what has happened? He heard a young lady's voice saying that she could cure him. He then saw her appearing on the doorway. That lady was standing there. Horace thought to run as the lady told him to call the police. So he told that lady to let her go and forget she ever saw him. But the lady agreed on one condition, that he should open the safe for her, as she had to wear those jewels for the party tonight. But she had forgotten the combination of the safe, or the code of the safe, number of the safe, so that she could take out the jewelry from there. So Horace opened the safe for that lady and handed the jewels to get his freedom. Now what has happened? From that very time, he moved out from that bungalow. But after 2 days, Horace was arrested for the robbery as his fingerprints were found. Now why it has happened? Because he forgot to wear his gloves. When he told the police that the lady of the house had asked him to open the safe, he was surprised to know that the real owner of the house was a 60-year-old lady. So that rich, charming lady was not the real owner of the house. Now Horace has soon realized that the young lady was also a jewel thief like him, who had used his skills to steal the jewels. And the young charming lady had tricked him. So let's move on to the story deeply, and in this video I am going to tell you detailed explanation, page wise and with difficult words. Now, it is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Now we know very well that it is a well said proverb that the honor among thieves means when two thieves are there, they are very loyal in their profession, they do not cheat. But does that really happen in this story? Let's say. Everyone thought that Horace Standby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health.
In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. So, Horace Tenby was a very good citizen and honest citizen, and he was a 50-year-old person, unmarried, and he stayed with his housekeeper, जो उसका पूरा पूरा ध्यान रखता था. And now he was running a very good business of locks as well. And he was having 2 helpers. उसके पास 2 helpers भी थे. He was running a prosperous business. And he was good and respectable citizen. But over here he is not a completely honest man. How? Let's see. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library, and he was he was fond of reading the expensive and rare books. So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. So what he used to do? He used to do only single robbery. वो पूरे साल में एक बार चोरी करता था. एंड वो चोरी क्यों करता था? क्योंकि उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, महंगी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और उनके लिए वो पैसे इकट्ठे करता था. एंड दैट इज़ वाई उसे चोरी की आदत हुई, ताकि वो बुक्स पढ़ सके, और फिर उन पैसों से वो बुक्स खरीदता था. किससे? सीक्रेट एजेंट से. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others. Now, वो बहुत ही clever चोर था, और वो ऐसे चोरी करता था जैसे कोई एक proper professional चोर जो हो वो practice करते हो. तो he used to do it in a very polished way. Now, for 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking all its rooms, expiring its path and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movies. Now, उसने एक हाउस देखा, और उस हाउस में चोरी करने की उसने सोची, और काफ़ी टाइम से 2 वीक से वो उस हाउस की स्टडी कर रहा था. कौन लोग हैं, कहाँ हैं, कितने रूम्स हैं, वायर्स कहाँ पर हैं, एक्सेट्रा. ना वहाँ वो देखता है कि वो फैमिली लंदन गई है, और ये पूरा बंगलो जो है वो सिर्फ 2 सर्वेंट्स रहते हैं इसमें. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in the bag on his back. So, as a very professional thief or a robber, he used to carry all his tools जो उसको चाहिए होते थे. वो देखता है 2 सर्वेंट्स गए हुए हैं, बाहर गए हैं, और अब उसके चोरी का परफेक्ट टाइम है. बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हॉरेस टेनबाई को थी वो थी टिकलिंग इन द नोज. जब नाक में थोड़ी सी टिकल होती है, खुजली आती है, रिगार्डिंग काइंड ऑफ एलर्जी फ्रॉम अ पर्टिकुलर फ्लावर्स. तो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो बस यही थी कि वो उसको उन कुछ फ्लावर्स से एलर्जी थी, और जिससे वो स्नीज करता था बहुत बार. There was about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he told them one by one, he expected to get at least 5,000. Now वो enter करते हाउस में गार्डन वॉल के पीछे बहुत आराम से, बहुत क्लेवरली, और अब वो देखता है कि उस सेफ में, ग्रांड सेफ जो है उसमें 15,000 पाउंड्स वर्थ ज्वेलरी थी, और उसके लिए वो काफ़ी अच्छा अमाउंट था. वो आराम से अपनी चीज़ें, अपनी बुक्स खरीद सकता था उन पर. इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. दैट मीन्स वो एक उस अमाउंट से 2 साल तक में, आगे आने वाले साल तक के लिए भी चोरी की उसको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन पैसों से वो काफ़ी बुक्स खरीद सकता था. देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप, और उसे ये था कि अब सेल लगने वाली है ऑटम सीजन में, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आएंगी, एंड अब उसके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से खरीद सकता है. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door.
He was always careful not to leave any fingerprints. Now here what we can see that वो जब एंटर करता है तो उन घर की चाबियों को वो किचन में टंगे हुए देखता है. किचन डोर पे टंगी हुई होती हैं. वो अपने प्रॉपर रेडी होता है, ग्लव्स पहनता है, चाबी लेता है और डोर खोलने की कोशिश करता है. और वो बहुत ही प्रॉपरली चोरी करता है बिकॉज उसको पता है कि मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं रहने चाहिए. A small dog was lying in the kitchen. Its tail made a noise and moved its tail in a friendly way. अब वो वहाँ पर जब देखता है, आगे बढ़ता है तो उसे एक डॉग भी नजर आता है. He saw the dog over there which was lying. अब he said to it, all right Sherry, Horace said as he passed. Now उसे नाम पता होता है डॉग का, वो चीज़ें पता करके रखता है और वो बहुत प्यार से पुचकारते हुए उसको कामली डील करता है डॉग को ताकि वो शोर ना करे. एंड द नेम ऑफ द डॉग वाज शेरी. Now the safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books are better. So that was a grand house. बहुत बड़ा हाउस होता है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं. एक बारी को हॉरेस सोचता है कि क्या मैं बुक्स के बजाय शुड आई स्टील ऑल द पेंटिंग्स फ्रॉम देयर. बट उसके दिमाग में आता है कि नो, बुक्स विल बी सेफर फॉर अ स्मॉल हाउस. पेंटिंग्स रखने के लिए जगह चाहिए, बुक्स विल बी बेटर. Now there was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब जैसे वो आगे बढ़ता है, he saw that टेबल पे एक वाज रखा हुआ है फ्लावर का और वहाँ उसके जब वो वहाँ से पास होता है उसकी नोज में अगेन टिकलिंग होती है और फिर वो स्नीज करता है. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. Now he has very cleverly noticed everything कि कब servants वापस आएंगे. उसके पास 4 घंटे होते हैं, वो आराम से चोरी कर सकता है. इतने में उसे जो स्नीजिंग और टिकलिंग होती है तो वो अपना सामान अरेंज करता है प्रॉपरली और फिर आगे बढ़ता है. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safe all his life. Now उसके लिए चोरी करना आसान इसलिए होता है क्योंकि लॉक्स एंड ताले खोलना उसका बिजनेस होता है और वो सेफ आराम से खोल सकता है. He could do that. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. Now he was all alone. What he did? He just disconnected all the important wires of the alarms while before beginning for the robbery. And when he came out, he started sneezing loudly because of that flowers. How foolish people are when they know valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid the safe. Now he is thinking in himself that how foolish the people can be, how foolish the rich people are actually. They had advertised the things, all the details about the bungalow in a magazine, in an article as an advertisement. और उसे लगता है कि लोग कितने बेवकूफ़ भी होते हैं कि जो अपने घर के डिटेल्स पूरी ऐसे ही शो कर देते हैं. और यहाँ तक कि ये भी बताया है कि सेफ एक पेंटिंग के पीछे है एंड चोरों को चोरी करने में आसानी हो रही है. But Horace found that flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Now he puts handkerchief on his face to cover his mouth so that he don't sneeze. He heard a voice from the doorway. What is it, a cold or a hay fever? Before he could think, Horace said, hay fever, and found himself sneezing again. Now as soon as he was about to open the safe, पीछे से एक आवाज़ आती है, एक लेडी की आवाज़ आती है कि ये क्या है, किस कारण है, is it cold or hay fever? And बिना देखे वो बोलता है because of the hay fever. वो उतना सोचता नहीं है. The voice went on, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you did better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. Now the voice is still continuing from the back of Horace standby from the door. और वो क्या कहती है voice? ये कहती भी रहती है कि तुम्हें इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए एंड तुम्हें एक बार वो डिजीज़ पता चल जाए और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुम अपने वर्क में सीरियस हो तो. एंड शी ऑल्सो से दैट कि
उसे एक आवाज़ आई ऊपर से, जब वो ऊपर थी तो she could hear the voice of this man. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. आवाज़ उसे बहुत पसंद आती है. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Now that what Horace found that she was a very charming woman standing in front of him, and she was very quite pretty young lady who was wearing a red color dress और उसके पास कुछ ornaments भी होते हैं. Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. Now वो कंटिन्यू करते हुए कहती है शेरी से कि लोग सोचते कि वो महीने भर के लिए बाहर गई है, बट नाउ वो वापस आ चुकी है, लेकिन उसको एक बर्गलर की एक्सपेक्टेशन अपने घर पर नहीं थी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. Now वो भी कहते हैं कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कोई फैमिली मेंबर से मिलूंगा. And that lady continued, she nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They did get you at once. Now वो पूछती है कि तुम्हें कुछ इनकन्वीनियंस हुई है और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए अब सोच रहे हो. Then Horace is saying कि मुझे भागने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से भाग जाऊँ. And the lady is telling तुम कर सकते हो, बट मैं पुलिस को बुला सकती हूँ और तुम्हारे बारे में सारा बता सकती हूँ. Horace said, I would go, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated and smiled on the face. I would make sure that you could do anything for some time. A few hours would be enough. Now Horace is saying कि हाँ आप कर सकते हो. टेलीफोन वायर्स वो कट कर चुका है, एंड देन वो थोड़ा सा स्माइल रख के फेस पे बोलते हैं, आई वुड मेक श्योर दैट आई कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मैं कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं करूँगा. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. यू डिड हर्ट मी. Horace pushed and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. Now it's a simple conversation going on between Horace and that lady, young lady, और वो बोलते कि मुझे तुम्हारे को फ्राइटन करने की कोई वो नहीं है. Horace suggested it would be nice if you forget you ever saw me, let me go. Now Horace is telling कि ठीक है मुझे यहाँ से जाने दो और बिहेव करो जैसे कि तुमने मुझे कभी देखा ना हो. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from a man like you. Now over here, this rich young lady is very confidently saying कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ. तुम यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ कहीं और घर में चोरी कर लोगे, और सोसाइटी को तुम्हारे जैसे आदमियों से बचने की ज़रूरत है. They should be protected from such kind of people. अब Horace स्माइल करता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि सोसाइटी को थ्रेट करूँ, सोसाइटी को डराऊँ. मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए चोरी करता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी. वहीं चोरी करता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे हों. आई स्टील फॉर वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. एंड मुझे वो प्रिजन के जो थॉट होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रीज़न के लिए ही चोरी करता हूँ. Now the lady laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. Now वो
उसको लगता है कि वो उसको पर्सुएट कर चुका है, उसको इम्प्रेस कर चुका है। वो बोलता है फिर से कि लुक, मुझे जाने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। Now the lady was silent, watching him closely, and said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" She is asking कि तुम्हें prison में, जेल में जाने से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, isn't it? She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. Now this lady was very confident. वो वहाँ से सिगरेट उठाती है सिल्वर बॉक्स में से, और हॉरिस उसको इम्प्रेस करने के लिए अब लाइटर जलाता है, उससे पहले वो अपने ग्लव्स उतार लेता है। You let me go. He held the lighter towards her, और फिर बोलते हैं कि तुम मुझे क्या जाने दोगी? Yes, but only if you will do something for me. वो कहती है कि yes, मैं जाने दूंगी ऑफ कोर्स, पर तुम्हें कुछ मेरे लिए करना होगा। Anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left him here in a safe. I wanted to wear them to a party tonight, so I came down them. But now वो रीज़न बताती है कि मुझे उसके हस्बैंड के साथ वो गई थी और ज्वेल्स उसके बैंक में थे, और अब वो आई है तो उसे उन ज्वेलरीज की ज़रूरत है आज रात को पार्टी में पहनने के लिए। एंड Horace smiled, "You have forgotten the number to open the safe." अब वो हॉरिस बोलते हैं कि तुम और शायद उसका कोड भूल गई हो या नंबर भूल गई हो, और वैसा ही होता है। एंड देन वो बोलते हैं कि फाइन, मैं तुम्हारे लिए वो सेफ खोल देता हूँ, डोंट वरी about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time. Now वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे और तुम मेरे लिए वो सेफ खोल कर रख दो, सेफ खोल दो, और मैं उसे तब तक ठीक रिपेयर करा लूँगी। Now this was the thing which the lady wanted from that Horace standby. तभी उसको वो जाने देगी। Now this was the important thing what Horace was thinking कि क्या वो सेफ उसके लिए खोल दे या नहीं। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. Now वो उसके लिए सेफ खोल देता है और खुशी खुशी वहाँ से वो चला जाता है उसकी ज्वेलरी देकर। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted, and he knew he would have to look for another safe. Now 2 days तक वो जो उसका प्रॉमिस था वो रखता है कि ठीक है वो चोरी और किसी घर पर नहीं करेगा, बट 3rd day मॉर्निंग उसको अगेन बुक्स की याद आती है कि हाँ मुझे वो बुक्स पढ़नी है, एंड नाउ ही हैज़ टू लुक फॉर अनदर सेफ, मतलब किसी और घर में अब चोरी करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. Now, जब उसका ये जो प्लान है वो चेंज जो प्लान है उसका वो प्रॉस्पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बाय नून टाइम पुलिस उसके घर पर आती है और उसको रॉबरी के नाम पर उसे अरेस्ट करती है, जो रॉबरी उस शॉटओवर ग्रांज में हो चुकी है, उसे वो अरेस्ट करने के लिए आती है। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. अब वो उसे ध्यान में आता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो तो कोई भी रिमार्क छोड़ता नहीं, बट नाउ उसे याद आता है कि उसने ग्लव्स उतारे थे, एंड दैट इज हाउ उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे पूरे घर पर लग चुके थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हाट ही सेड, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। वो पुलिस से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने चोरी नहीं की, ही ओनली ओपन द सेफ फॉर द ओनर ऑफ द लेडी बिकॉज द लेडी टोल्ड हिम टू डू सो। वो पुलिस से ये कहता है। Now wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. Now उसे अब पता चलता है कि actually the real owner जो है वो
एक ओल्ड लेडी है जो 60 इयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाल ग्रे हो चुके हैं. दैट वाज द रियल ओनर ऑफ द हाउस. Horace is now the assistant librarian in the prison. So उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं and again he became the assistant librarian in that prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. और फिर उसको उस लेडी का याद आती है कि वो यंग लेडी वाकई में द रियल ओनर नहीं थी, वो सिर्फ एक उसी के जैसी एक चोर थी, किंतु वो स्मार्ट चोर थी, बहुत यंग एंड चार्मिंग लेडी थी एंड वेरी क्लेवर लाइक थीफ भी थी जो उसको ट्रिक किया उसने. He gets very angry when anyone talks about honors among thieves. Now उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई ये बोलता है, ये कहावत उसके सामने बोलता है. कौन सी कहावत? कि चोरों के अपने उसूल होते हैं, वो एक दूसरों से ट्रस्ट रखते हैं, एक दूसरों के लॉयल्टी का ख्याल रखते हैं. बट उसे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ. So students, this was all the story, a very simple story on blind trust, and only one thing I can tell you, that this thief actually got the taste of his own medicine. He just got the taste of his own deeds as well. I can say that जो उसने blind trust किया था वो वापस उसको उसका lesson सिखाने को मिला, and he understood the fact कि हमें किसी भी पर्सन को बाहर से जज नहीं कर लेना चाहिए. उसे लगा कि दैट लेडी इज द रियल ओनर बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड द कॉन्फिडेंट ऑफ दैट लेडी, बट फ्रॉम इनसाइड देयर इज द टोटल ऑपोजिट थिंग ऑफ द रियलिटी. सो दिस वेरी सिंपल स्टोरी विच गिव्स द रीजन ऑफ the result of the blind trust and blind faith is not always right in life. I hope you all get it. Thank you students. Goodbye.